Hello, everyone, and welcome to a very special session of our Amal Stories Alumni Connect series. I'm Adnan Tariq, and today we are celebrating a milestone, which is our 10th session of Alumni Connect series, and I couldn't be more excited to share it with all of you. So, before starting the session, first of all, I want to take a moment to thank our amazing alumni for overwhelming support you have shown through this series. And, it's incredible to see how these conversations have made a real impact, guiding so many of you in your careers and professional growth. Your stories, insights, and experiences have helped us create something truly meaningful, and we are so grateful to each of you. Now, for this special session, we are thrilled to have Ali Afzal with us today. Ali is the co-founder of TechnoQs, where he helps startups grow and succeed through innovation, design, marketing, and technology solutions. His passions for entrepreneurship and creativity drives everything that he does, and I know his journey will inspire all of us. So, Ali, we are excited to have you here, and thank you so much for joining us to share your experiences. So, to kick things off, could you just tell a bit about yourself, about your background, and maybe focus on how TechnoQs came to be? जी, first of all, Assalamu alaikum. Thank you so much, Adnan bhai, for having me here. Or so good to meet you again, or through the Alumni Connect. Uh, so about me, आपने introduction तो दे दिया. So I would say कि I've been always a kind of person very interested in terms of who am I, what I can do, what's my potential. So university time से कि I was very interested actually to know myself firstly कि मेरा मेरा अपना कैलिबर क्या है, मेरा अपना पोटेंशियल क्या है. और बाय द टाइम अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा इवॉल्व किया उसमें, अपने आप को जाना भी, और अपने प्रोफेशनली रोल्स भी मैं चेंज करता रहा हूँ. हाँ, राइट आफ्टर इवन यूनिवर्सिटी में आई हैव गॉन थ्रू सम एक्सपेरिमेंटेशन लाइक इंटर्नशिप्स जिस जिस फील्ड में आई वाज इंटरेस्टेड इन, or even after the university. So starting from university, so my background is obviously as a chemical engineer from UED. I got to know after 2 years of university that I'm not very much interested. I'm not an engineer type of person. Like who can go on a plant job और वो उसको उसकी running और सारी चीज़ें वो देख सके. So I'm more kind of people oriented person. So I need some sort of space and position for myself where I can see that I am leading a group of people, or I am actually adding some value in their life, right? So उस वक्त पे my thought process was that the best position for me is the education sector. Some role on which I can be responsible for training and development, maybe of the students, or maybe in the even the corporate sector. So उन दोनों में ही मैंने by the time मैंने internships भी की, and उसमें professionally jobs भी की उसमें. And also by the time I realized the earning is the main thing as well. uh, तो उस reality check से भी मैं गुजरा हूँ. So I have tried to combine the both thing where I can see my like vision of life जिस पे मैं अभी तक आया हूँ, whether that's true or not, let's discuss that later. लेकिन उन दो चीजों को मैं कंबाइन कर सकूं कि आई कैन बी पैशनेट अबाउट समथिंग, अबाउट माय रोल, एंड मुझे वो करके मजा आए जो भी मैं काम करूं, राइट. और देन आई कैन ऑल्सो अर्न फ्रॉम दैट. सो कंबाइनिंग टू थिंग्स आई केम टू द कंक्लूजन कि आई हैव टू गो विद माय ओन स्टार्टअप. तो वहां पे आई कैन क्रिएट माय ओन स्ट्रक्चर, आई कैन क्रिएट द हायरार्की दैट आई वांट, or the process that I want, the people I want to work with. So here by the time, so technique use and so on, it's been almost more than 5 years I've been here. Or yeah. Thank you so much for sharing that all that crux of your overall journey, your journey of that you mentioned about discovering and
knowing myself, evolving through different roles, job and responsibilities. And then by the time you reach here, you have also prioritized quite a few things like financial stability and trying to balance between different processes, vision of life. The brothers would love to know that and explore it later in the conversation as well. And then the hierarchy and the processes that you want to establish through which you can achieve your goals and missions, the brother. So Ali, we'll move on. Like we'll start. First of all, if you can briefly touch base upon what TechnoQs is, and then we'll dive on to okay, what is your what is something that you are excited about working um, in your own startup. Maybe we would like to know dive a bit deeper into that. Right. So previously, in the starting 3 years, we were focusing on two main core domain. So one was design and marketing. फिर उसकी आगे subdomains हैं. They are different services and packages that we are offering to our client. But अगर इसको I can sum up in a simple way. So we are basically helping our client to maintain their online presence. So, and our target audience is the startups from the US and the UK, जो कि अभी start ले रहे हैं. So, helping them out to maintain their online presence. And the second domain is like website development and the designing, because that also somehow comes in the marketing as well. So we are helping our clients in that as well. So they can have their website, they have their identity online, और उसमें उनको help out करना, and then developing a very strong strategy and a plan for them for the whole year, that how they can, like, if they are in the very start and learning from our experiences and from the experiences of other clients in the US. So we suggest them a very good strategy, a very customized strategy, so they can follow and they can grow and they can get more customer, whether they are service based company or a product based company. And the third domain that we have started just 2 year back is the 3D modeling and animation domain, because there was something uh, very like you can say काफी चल रही है domain US में. So we try to focus on that as well. Other than that, उसमें भी designing का कुछ element आ जाता है. So the three domains are overlapping somehow in a way or other, but separately भी इन three domains में काम हो रहा है. So these are the things that we are doing in the TechnoQs. ये services as a service की बात करें जी. All right, Zabardast. So if I ask you that, which is your favorite domain to work in? So what one domain would it be? So I am personally working with the designers जो कि Mm, marketing and design domain में है, because the clients who are with me, they are of the design, they I am dealing their design projects and marketing mhm, projects, their strategy and the content management. So उसमें I love to work on that as well. mm. uh, so उसमें भी front end में I would say the interaction with the people, मैंने कहा कि पहले ही मैं एक चीज जो मैंने अपने आप में देखी कि आई रियली लव टू इंटरेक्ट विद द पीपल, सो वेदर दे आर क्लाइंट्स ऑन दिस एंड और वेदर दे आर लाइक टीम मेंबर ऑन द अदर एंड. सो Mm-hmm. मेकिंग अ ब्रिज इन बिटवीन देम. Mm. जी. Interesting, interesting. So, Ali, I'm going to dive deeper into your experiences. So, and the first thing that comes to my mind, like when you shared earlier as well, that previously you have worked in education sector, in corporate sector, in various roles and responsibilities, and now you are working in your own startup, right? So, एक जॉब मेंटेलिटी से ट्रांसफर होना towards your own startup, like what was the whole transition like, and how were you able to adapt to that? So if you please shed some light on that. जी, so I'll be like very honest. So in the university time really उसमें आपको नहीं पता होता कि किस आपने फील्ड में जाना है. एक फ्लो चल रहा होता है एक मार्केट का. आपके इर्द गिर्द यू हैव लाइक hundreds of engineers जिनका एक mindset है. तो by the time it start affecting you as well, right? कि I have to go in the market and I am an engineer, मुझे भी ये चीज़ करनी है.
तो स्टार्टिंग में तो द गोल वाज वेरी सिंपल टू गो इनटू द मार्केट एंड आई वांट अ जॉब राइट नाउ टू सो कैन आई कैन अर्न समथिंग और फिर वो एक साइकिल चले. But by the time I realized कि I need to work on something के जो जिस पे मैं काम करना चाह रहा हूँ, कुछ मेरा प्रोडक्ट या सर्विस बेस्ड सेटअप हो, कुछ भी ऐसा हो, तो उसमें the one thing that was really helpful for me was were my mentors. So they guided me a lot. So उनके साथ काफ़ी ज़्यादा मेरी इस चीज़ पर डिस्कशन चलती थी, whether even to have a business or not, और मैं कर भी सकता हूँ या नहीं भी कर सकता. So what they suggested me is the like very realistic thing कि you should go with the experimentation. So जितनी भी ये jobs थी was a part of experimentation for me as well. And also like it was a first source of learning for me. Obviously आप एक जगह पे जाके if you want to have your own business और उसमें आपको HR deal करना है, you have to deal with the finances, you have to deal with the clients, with the team and everything, starting में तो HR पर्सन आप खुद हैं, और हायरिंग पे जो है वो भी आप खुद हैं, फिर क्लाइंट हैंडलिंग पे भी आप खुद हैं, इवन ऑफिस बॉय भी आप खुद हैं. तो वो चीज़ें सीखने के लिए यू हैव टू बी पार्ट ऑफ द सिस्टम, राइट? यू हैव टू फाइंड अ गुड बॉस, सो हु एक्चुअली इज अ रियल सोर्स ऑफ लर्निंग फॉर यू. सो वही मैंने किया. लेकिन मैंने एक चीज़ की कि इंजीनियरिंग में आई वॉज प्रीटी मच श्योर कि इसमें मैं जाके परफॉर्म नहीं कर सकूंगा. सो मेरा भी नुकसान है, कंपनी का भी नुकसान है. ये देर आर सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स मी, प्रोफेशनली भी, एथिकली भी, कि अगर मैं किसी जॉब के लिए कमिटमेंट कर रहा हूँ तो मैं वो काम कर भी सकूं. सो एट दैट टाइम व्हाट आई रियलाइज कि एजुकेशन और सेक्टर जो है मेरे लिए वो बेस्ट है. अब एजुकेशन सेक्टर में क्या चीज़ जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा फैसिनेट कर रही थी, आप इसका भी पार्ट हैं. यू ऑलरेडी नो दैट कि डेली बेसिस पे द मेन फोकस इज द लर्निंग, कि आज मैं ये सीख रहा हूँ, आज मैं ये सिखा रहा हूँ, ऑन द बोथ हैंड्स, राइट? आप इवन आपके जो कोर्सेज होते हैं उसमें ऐसी कई चीजें होती हैं जो जो आपने कभी कॉन्सेप्ट्स पढ़े भी नहीं होते, आवर एजुकेशन सिस्टम और वो सारी चीजें. लेकिन लीडरशिप के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, ठीक है, और एंटरप्रेन्योरशिप के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, इवन एथिकल कॉन्सेप्ट और प्रोफेशनल कॉन्सेप्ट्स मार्केट के क्या हैं, तो वो आपको इन कोर्सेज में जाके या तो पढ़ के या पढ़ा के वो आपको क्लैरिफाई होते हैं. सो दैट वाज द मेन पर्पस कि एज अ पर्सन आई कैन लर्न दोज थिंग्स, सो इन फ्यूचर आई कैन अप्लाई राइट अवे. तो ये मेरा मेन पर्पस था जितनी देर एजुकेशन सेक्टर के साथ रहा हूँ, टू टू पर्सनली फोकस ऑन माई पर्सनैलिटी, ऑन माई सेल्फ. Right. Thank you for sharing that. And that makes absolute sense. Okay, the experiences that you acquired during your professional development, like in the education journey, by experiencing all of that, you are now in a position to, implement those strategies in your own business, in your own startup as well, right? So I think it's a lot of experiential learning and that comes at play. So we would love to know about your professional experiences as well, even like before TechnoQs. So, like you have mentioned about you worked in education sector. So, would love to know a bit more about where you have worked and what was that experience like? So during my university life, I worked with the organization, those who were involved in corporate trainings and educational training. So usme I worked firstly with the Role Models organization that's in Lahore, or their focus is mainly on the corporate sector. And so yeah, I was part of that for about that. That was mainly internship. So I just wanted to get in touch with that environment just to realize कि I can do that or not. और उस first internship I got to know, yeah, this is something I can do and I should do, ताकि वो एक learning phase में मैं जा सकूं. So that was the first thing I realized. That उसके बाद लाहौर में that's very famous. I started doing some like courses for about a year from Qasim Ali Shah Foundation. So I can see who are trainers, what they do, even the corporate and educational side are two different sides. So got to got to know that कि ये educational ये जो learning and development वाला सारा sector है, ये भी आगे divided है.
तो मुझे किस साइड पे जाना है। देन देयर वाज अ टाइम के आई डिसाइडेड कि ठीक है जी एजुकेशन वाली साइड पे जाते हैं। देन द फर्स्ट जॉब, द फुल टाइम जॉब आई डिड वाज एज अ करियर काउंसलर. So that wasn't a big company, but that was really a good start. I got to know different things that a career counselor should do. How they can connect with the person they don't know, and how they have to collect data from them, and then analyzing that data and suggesting the best possible career options for them. So that was the first position I got to learn those things about the career counselor, कि कैसे होता है ये process और सारी चीजें. And that was the first time I got to know that Pakistan maybe there are a lot of options for even medical students and for engineering students if they are. So हमारे यहाँ पे ज़्यादा medical students का मसला होता है कि उनके MBBS में एडमिशन नहीं हो रहा. Then what are the other options? So वो that was the first time. एंड देन राइट आफ्टर जी, ये जिसे आप एक सेफ हेवन कहते हैं, अमल एकेडमी. सो आई ज्वाइंड अमल एकेडमी. आई वाज अ पार्ट ऑफ अमल एकेडमी फॉर अबाउट ईयर, and that was a very good time, I must say. There were a lot of people uh, जिन्होंने मुझे कंटिन्यूअस फीडबैक दिया, जिन्होंने मुझे बताया, जिन्होंने मुझे सिखाया फ्रॉम द स्टार्ट टू एंड. बिकॉज जब आप एक बिल्कुल नई मार्केट में आते हैं ना, यू डोंट नो एनीथिंग, तो उसमें दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके इर्द गिर्द एक ऐसा सर्कल हो जो आपको बताए कि किस तरह से इस सेक्टर में, इस करियर में आपको फर्दर ऑन मूव करना है. सो दैट वाज अबाउट ईयर मैंने यहाँ पे किया. देन आई मूव टू यूसीपी on somehow the same role. Then after that वहाँ पे एक बैच मैंने कंप्लीट किया. So after leaving Amal Academy, I started the TechnoQs, and also I joined the UCP. Side by side ये startup चल रहा था. So what I did, because that's a safe transition. You asked about transition. So for me, that's a very good option and very safe transition कि you are earning from a full time job जिससे आप सीख भी रहे हैं. देन पार्ट टाइम जितना आप मैनेज कर सकते हैं, यू डू व्हाट यू लव टू डू, राइट. सो वो आहिस्ता आहिस्ता उस टेन्योर में जब वो ज्यादा काम हुआ, देन आई परमानेंटली लाइक ज्वाइन टेक्निक्यूज. सो या. Right. I would say easier said than done because while you are transitioning and even, setting up your own startup and then working at an organization, that is really tough, Ali. So, my, the only thing that I want to ask you right now is, okay, how are you managing both of them side by side while you were setting up TechnoQs as well and then working in that role along? So, one thing was really clear to me. The clients and the audience I'm going to target are from different time zone in the US, right? Hmm. So that was the main deciding factor as well. Other thing was, I know if obviously ये आपको भी चीज पता है, if you know you have to do something, then you have to. So there is no B or C option. Hmm. So right after 6, सो मैं यहाँ पे टेक्निक्यूज में आता था, और यहाँ से फिर 12 1 2 बजे यहाँ से जाना, एंड देन अगेन सुबह यू हैव टू गो टू योर जॉब एट 9 शार्प. सो ये वाली चीज़ें ऑब्वियसली आपको वो फिर साथ साथ करनी है इफ़ यू वांट दैट ट्रांजिशन. अगेन आपने जैसे कहा कि इतना आसान नहीं है, लेकिन आई वुडेंट से दैट इज़ अ लॉट ऑफ स्ट्रगल. बिकॉज for me the real struggle is for the people जो के पाकिस्तान में, and those who are barely earning that much के वो एक वक्त का वो खाना भी वो जो है ना वो कमा सके. सो रियल स्ट्रगल उनकी है. हमारे लिए हाँ हार्ड वर्क है. अगर किसी ने इस पाथवे पे जाना है, इस करियर पे जाना है, एंड दे वांट टू डू द बिजनेस एंड द स्टार्टअप, तो फिर ये Hmm. चीज़ें फिर आपको ऑन करके चलनी पड़ती हैं. इतना रिस्क आपको फिर लेना पड़ता है, और रिस्क भी नहीं है. आई वुड से अगेन इट्स हार्ड वर्क कि आप उस चीज़ के साथ कितना कमिटेड हैं. Hmm. और वो यही आपका जर्नी और यही ट्रांजिशन बताती है कि आर यू ऑनेस्ट विद योर सेल्फ और नॉट, और Hmm. वेदर
दैट्स जस्ट लाइक ड्रीम के मुझे ये करना है. Mhm. That's truly inspiring and totally agree with you on the part that hard work is non-negotiable. So, moving forward, Ali, as you know that professional development is equally important along with the academic qualifications and the skills that we acquire, right? And in the beginning, you were mentioning about talking to your mentors as well, and along that, you also mentioned about going for some courses as well. So, we would love to know that what were the steps that you took for your professional development, other than you've already specified, which helped you to get where you are right now, or even to develop those skills enabling you to do your job effectively. Right. So I still remember in the start, there were few things that my mentor suggested me कि अली ये आपने जरूर करना है. जिस भी करियर में आप जाएंगे ये आपके लिए बेनिफिशियल है. Whether you're going for a job, whether you're going for a business, these are very, very, very important for you if you are taking your life very seriously, if you are taking your career very seriously. So first thing was book reading के you have to go through the stuff के इतना इतना कुछ लिखा गया है, इतने टॉपिक्स पे लिखा गया है. सो यू जस्ट हैव टू चूज के आपका जो करियर है और आपके जो माइंड में है वो ऐसा हो नहीं सकता कि उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ना निकला हो. तो यू हैव टू गो थ्रू दैट स्टफ. You have to develop a habit of book reading. I still remember he used to say कि readers are the leaders. So if you want to be a leader, so ये तो आपको एक हैबिट डेवलप करनी है. बिकॉज उससे क्या होता है, एक चीज जो मैंने बाय द टाइम सीखी है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट के हम जो है ना जो जो स्टफ है, जो नॉवल बेस्ड स्टफ है या कुछ ऐसा है. मैं बात कर रहा हूँ कि सेल्फ हेल्प स्टफ की. मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसी रियल टाइम स्टोरीज की जिससे यू कैन रियली लर्न, जो आपसे रिलेटेबल भी हों. राइट. एंटरप्रेन्योरशिप पे बहुत ज्यादा स्टफ इतना लिखा जा चुका है जो बहुत ज्यादा रिलेटेबल है. तो पहले उसको सीख के तो अप्लाई कर लिया जाए, वेदर कि हम सोचेंगे कि अब क्या करना है. तो वो आपका एक वर्ल्ड व्यू बनाता है. राइट. जो स्टफ आप पढ़ रहे हैं, जो स्टफ आप सुन रहे हैं, एंड अगेन द पीपल यू हैव अराउंड यू, सो वो आपका एक वर्ल्ड व्यू सेट करता है. राइट. टू स्टे पॉजिटिव इवन इन अ नेगेटिव सिचुएशन, ये कैसे हो पाता है, ये उसी चीज से. सो दिस वाज द फर्स्ट थिंग he suggested me. The second thing, again, to take continuous feedback. He suggested me कि if you are working somewhere, जो आपके लाइन मैनेजर्स हैं, इवन आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, यू हैव टू टेक फीडबैक. फीडबैक समटाइम्स लोगों को नहीं पता कि हाउ टू गिव अ फीडबैक. हम में तो इस पे दे हैव अ प्रॉपर एक्सरसाइज. सो हमारे यहाँ पाकिस्तान में फीडबैक ये है कि तुम्हें ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता. सो इवन ही टोल्ड मी के even the feedback would be harsh sometimes. People don't know how to give feedback, but you have to take that as a gift. कि अगर आपको एक फास्ट पेस में लर्निंग करनी है ना, द फीडबैक इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. और वो किसी से भी लिया जाए. आई स्टिल रिमेम्बर द लास्ट डे ऑफ माई यूनिवर्सिटी, आई प्रिंटेड अ डॉक्यूमेंट. उसमें डिफरेंट क्वेश्चंस थे अबाउट फीडबैक, और वो मैंने सारे अपने वो हॉस्टल में बॉयज को, क्योंकि दे वर द गाइज हु स्पेंड एटलीस्ट 4 years विद मी, दे नो मी बेटर देन मी. राइट. सो तो उनको मैंने वो स्प्रेड किया और वो फीडबैक उन्होंने दिया. और इवन आई रिमेम्बर कि जहाँ पे भी, जिस भी जॉब पे मैं लीव कर रहा हूँ, वहां से उनसे फीडबैक लेके निकलूँ पॉसिबली हो तो सबसे, वरना जो मेरे लाइन मैनेजर्स हों या मेरे मेरे साथ जो काम कर रहे हैं उनसे लाजमी फीडबैक हो. तो ये दूसरी चीज थी. तीसरी चीज थी टू हैव, यू आर द एवरेज ऑफ 5 people you spend time with. तो टू हैव द पीपल इन योर सर्कल हु हैव दैट माइंडसेट जिस चीज पे आप जाना चाह रहे हैं. यू नो अब मैं बिजनेस साइड पे हूँ तो मुझे पता है मेरा सर्कल जो है ना वो बिजनेस माइंड और पॉजिटिव लोगों का है. क्योंकि बिजनेस में आए दिन वी हैव अ न्यू प्रॉब्लम, अगेन न्यू प्रॉब्लम. प्रॉब्लम नहीं भी है तो इंटरनेट और लोड शेडिंग और इस चीज का पाकिस्तान में निकल आएगा तो वो अगेन एक हमारे ऊपर एक बर्डन आ जाता है. ये आप मतलब कि मे बी आप इसको समझ सकें या ना समझ सकें कि मेरा क्लाइंट मुझे आके ये कह रहा है कि तुम्हारे मुल्क में इंटरनेट नहीं इसलिए मैं तुम्हें प्रोजेक्ट नहीं दे सकता. सो वो एक अगेन हैवी बर्डन होता है कि इसमें मेरा क्या कसूर था. तो वो एक पॉजिटिव लोगों का एक सर्कल हो
आपको जो मोटिवेट रख सके, आप जहाँ पे बैठ के वेंट आउट कर सकें, आप उनसे सीख सकें। तो ये तीन चीजें थी। आपने पूछा कि प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए क्या चीज आपने सोची। दैट्स व्हाई दीज वर द डिसाइडिंग फैक्टर फॉर मी वेयर एवर आई वर्कड, कि ये चीजें वहां पे हैं तो यस, ये चीजें वहां पे नहीं हैं तो नो। That's great. And that is really insightful. The pointers that you have shared are actually, the determining factor, defining factors that contribute to success. So, Ali, will move forward with that. And this brings us to the point where, although you have shared a lot of pointers on what to do, how to take things forward about the mentality, vision, and startups, and the suggestions are also really valuable. Um, but if we go back in time and one advice that you would have for the alumni who are hearing this conversation, what would you suggest them to do? If I think the first thing I would suggest to the people who are like fresh graduates to, so you guys are also focusing on that, to learn the professionalism and the ethics that they have to do in the market, they have to practically experience in the market, और इस चीज को वाकई ही एक सीरियसली लेके चलें, राइट। सो अभी तक हमारे साथ ये हो रहा, पीपल दे आर कमिंग इन द इंटरव्यू, दे डोंट नो हाउ टू स्पीक, हाउ टू टॉक, हाउ टू सिट, द बेसिक एथिक्स, कि जहाँ से हम एक पर्सन को फिर वो जज कर रहे होते हैं कि वेदर टू हैव दैट पर्सन और नॉट, वेदर टू वर्क विद दैट पर्सन और नॉट। So these are like very very genuinely important thing. Secondly, to work on their communication. So अभी का जो हमारा सारा एरा चल रहा है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये हो रहा है कि पीपल आर मोर फोकसिंग ऑन रिमोट बेस्ड जॉब्स, लेकिन वो बाहर यूएस की हैं, यूके की हैं, और आउट ऑफ पाकिस्तान भी अब ज़्यादा फोकस होने लग गया। सो फॉर दैट ऑब्वियसली दे मस्ट बी हैविंग लाइक वेरी गुड कम्युनिकेशन। और lastly, so again, I would suggest them to learn about themselves as much as they can, right? If they know about themselves, so it, ये कहने में वाकई ही आसान है, लेकिन पीपल आर नॉट यूज टू ऑफ के मैं अपने बारे में जानूं, मुझे अपनी वर्ड स्टेटमेंट क्लियर हो, एज अली अफजल मुझे पता हो कि हु इज अली अफजल। टेक्निकल यूज के मुझे व्हाट स्टेटमेंट और वाई स्टेटमेंट और हाउ स्टेटमेंट मुझे क्लियर हो। So that takes a lot of courage, that takes a lot of time as well, even to sit down and to see and explore the things, and again thinking on the feedback that people are giving to you, कि भाई ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है। सो उस पे अपने जो सिंपली व्हाट वाई हाउ स्टेटमेंट पे काम करें। सो फिर चाहे whether that's a job or whether that's a business, that will be like very easy for them to choose and to make a decision. right, know thyself, right? And I know that's a journey that requires a lot of effort, but I'm I'm sure that whoever like puts in the required effort, they are able to, go through that. So that brings us to the end of the session. And with that, I would like to thank you, Ali, for sharing your journey with us today. It has been very inspiring. The suggestions, the advices that you share with the alumni today that are very, helpful as well and would help them to carve their paths, accordingly. So again, thank you so much for joining. थैंक यू सो मच शदानवी फॉर हैविंग मी। बड़ा अच्छा लगा आपसे दोबारा बात Mhm. करके, एंड टू रिमाइंड ऑल like my career path again, or yeah, thank you so much. Awesome. So, I would like to say that your story is a powerful reminder of strength and perseverance that comes just from, staying true to your goals. And if we really focus on the holistic picture, that it's in moments like these that we see the value of community and learning from each other, supporting each other, and even growing together. So, as we close the conversation, I'd like to leave my audience with this thought that no matter where you are in your journey, remember that every challenge is an opportunity in disguise. Keep moving forward,
trust in your path, and know that you have a community here that believes in you. So, with that, I look forward to seeing all of our amazing audience that joined us on Facebook to in our next session, where we'll continue to share and celebrate remarkable stories of our Amal alumni. And until then, take care, stay connected, and keep striving for your dreams. Thank you all, and have a wonderful day, wonderful evening. Thank you so much.